Assalamu alaikum, dear student. As you know that we have started chapter number 3, that is dynamics. Up to now in dynamics we study forces, we discuss forces, basic thing of cause of motion and Newton 3 laws of motion. Now we discuss topic number 3.4. This is linear momentum or simple momentum. Momentum is basically the quantity of motion in a body is called momentum. कि कितनी मकदार में किसी जिस्म में मोशन की मकदार कितनी है उसको हम क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू कंसिडर certain object, if you apply force on this object, so due to applied force this object box starts motion. So we call it what, the quantity of motion is how much. This quantity of motion is called what, momentum. Or momentum is also defined as the product of mass and velocity is called momentum. और या प्रोडक्ट ऑफ हमारे पास के मास और वेलोसिटी की जो प्रोडक्ट है उसको हम क्या, क्योंकि किसी चीज़ पे अगर हम फोर्स अप्लाई करें, फॉर एग्जांपल ये बॉक्स है तो इसका मास भी है, और जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये इस पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट चेंज करेगा, दूसरी पोजीशन पे आएगा, तो इस पोजीशन पे हमारे पास क्या है, इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है. वेलोसिटी भी इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये ऑब्जेक्ट आया है तो इसकी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है. तो मतलब वेलोसिटी, मास तो है, अगर वेलोसिटी नहीं है तो देयर विल बी नो मोमेंटम, मोमेंटम शुड बी जीरो. अगर हम ये ले लें, हम इस पे फोर्स अप्लाई करें, इस ऑब्जेक्ट का मास तो है लेकिन ये मोशन स्टार्ट नहीं कर रहा है, बस इधर ही खड़ा है, तो इसका मोमेंटम क्या है, जीरो है. तो मोमेंटम क्या है, बेसिकली बता रहे हैं क्वांटिटी ऑफ मोशन इन बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम, और द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड व्हाट, मोमेंटम. Momentum is a vector quantity and it is denoted by p. हमारे पास मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है और इसको डिनोट करता है p पे. फॉर एग्जांपल, एंड मैथमेटिकली मोमेंटम इज इक्वल टू p इज इक्वल टू mv. मोमेंटम डिपेंड ऑन मास एंड वेलोसिटी. दिस टी because we told the product of mass and velocity is called momentum. Its SI unit is Newton divided by kg meter by second inverse. kg meter by second ये यूनिट है इसका, या ये न्यूटन सेकंड भी हमारे पास इसका यूनिट आ सकता है. अब किस तरह मोमेंटम हमें क्या बता रहा है, मोशन बता रहा है. फॉर एग्जांपल, आई टोल्ड यू मोमेंटम मेजर द क्वांटिटी ऑफ मोशन. फॉर एग्जांपल, अगर हम एक ट्रक ले रहे और कार ले रहे, अब अगर आप ये दोनों, क्योंकि मोमेंटम क्या है, हमारे क्वांटिटी ऑफ मोशन है, इंजन, इसके ट्रक का इंजन भी फोर्स अप्लाई करे तो मोशन प्रोड्यूस, कार का इंजन भी, इसमें अंदर इंजन है तो ये भी फोर्स अप्लाई कर रहा है. सो it's a common observation that larger force will required to stop the car truck as compared to the car, because the momentum of truck is greater than car. Also the masses are truck is greater than car. Also the velocity of truck should be greater than car, so the truck will more momentum than as compared to car. So basically momentum tell us simply the quantity of motion in our body, कि कितनी हमारे पास बॉडी की क्वांटिटी ऑफ मोशन कितनी है. अब अगर for example momentum actually momentum depends on two things. Momentum is directly proportional to mass and momentum is directly proportional to velocity. If we consider velocity is constant, if you consider velocity is constant in this case, so if greater is the mass, greater will be the momentum. Of truck is more momentum than car if they are moving with same velocities, because truck has greater mass as compared to car. In this condition also momentum should be greater. And if we consider the mass is constant and velocities are different, changing, so momentum should be also be greater, because if a truck is moving fast, much more velocity as compared to car, so the momentum of truck will be greater than car. So it is called what, a linear momentum or simple momentum. Just momentum tell us how the motion, what is the quantity of motion in a body, we call it what, momentum. Now how we should discuss that force and change in momentum. How force is related with momentum. Force होगा तो momentum में change आएगा, force नहीं होगा तो momentum में change नहीं. If the force is present, there should be change in momentum. How? Because I told you, if the object is at rest,
I told you momentum. In what we should discuss in momentum, we discuss quantity of motion in momentum, हरकत की मिकदार. If the truck and car is just stand on its own position, they are in rest, so there will be change. The force is not responsible because force is not apply, so there is no change in momentum. Quantity of motion तो वही जीरो है इसकी, मोशन है ही नहीं, हर वेलोसिटी जीरो है, तो वेलोसिटी जब जीरो होगी मास तो है लेकिन वेलोसिटी जीरो, तो मोमेंटम इसका क्या होगा, जीरो. अगर ये रेस्ट में है तो मोमेंटम जीरो होगा. तो नाउ वी डिस्कस हाउ द फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल इन चेंज इन मोमेंटम, कि मोमेंटम में उसकी चीज़ की मोशन में तब्दीली, क्वांटिटी में कौन ला रहा है चेंज, कौन ला रहा है, फोर्स रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं. For example, and rate of change of momentum is equal to force or not. If you consider mass of object, कोई हमने एक बाल लिया जिसका मास m है और वो रेस्ट पोजीशन पे पड़ा है. अब इसकी क्वांटिटी ऑफ मोशन हम किस तरह पता चलेगी, इसकी मोशन ये कौन इसको कौन मोशन में लाएगा. इफ़ यू exert a force, so it will start motion, displacement is changing, and this ball is moving with certain velocity, that is vi. So if you exert a force, this ball will start motion, so it covers certain distance in certain time, so acceleration velocity is changing, so acceleration is produced. After certain time its velocity become what, vf. So when we force is applied, then is their quantity of motion is changing. So according to Newton's second law of motion, we know that because in second law we state that if force is applied, force is directly proportional to acceleration. Force applied होगा तो acceleration produce होगा, force applied नहीं होगा तो acceleration produce नहीं होगा. How? Because if you applied force on this object, its velocity changes from one point to another point. So if the velocity is changing, so acceleration is produced. And masses are same because one on same mass we applied force. Because we didn't consider different balls, we consider one ball, so mass is constant, so F is equal to ma. And you know that acceleration from the previous chapter, we how we can define acceleration, the rate of change of velocity. Acceleration is produced due to change in velocity of, क्योंकि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, कब प्रोड्यूस होगा, जब वेलोसिटी चेंज होगी. क्यों वेलोसिटी किसकी वजह से चेंज होगी, फोर्स की वजह से चेंज होगी. सो वी नो दैट एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डिफाइन कर, एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम. तो वेलोसिटी क्या है, इनिशियल पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी वी आई है और कुछ देर बाद जो वेलोसिटी फाइनल होगी वी एफ होगी, तो वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाय टाइम. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. नाउ पुटिंग द वैल्यूज ऑफ एक्सेलरेशन, दिस इक्वेशन नंबर 1, basically we derive that जो मोमेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज रिस्पॉन्सिबल इक्वल टू फोर्स और नॉट, कि जो मोमेंटम में चेंज है वो फोर्स की इक्वल बराबर आ रहा है कि नहीं यार. सो एफ इज इक्वल टू एम वी, इसकी एम अपनी जगह एक्सेलरेशन की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर ली, तो वी आई वी एफ माइनस वी आई डिवाइड बाई टाइम. इफ वी मेक सम मैथमेटिकल ऑब्स्ट्रेशन, सो एफ इज इक्वल टू, इफ यू अप्लाइड मास ऑन, if you applied mass in this equation, if you applied mass in this equation, mvf mvi, so it become mvf mvi divided by time. And we know that momentum is equal to, basically formula of momentum is equal to what, p is equal to mv. Now object is initial, what is the momentum quantity of motion, initially ऑब्जेक्ट की क्या थी पोजीशन ए पे, इधर इनिशियल जो इब्तिदाई मोमेंटम है उसको इनिशियल मोमेंटम कहते हैं, जो फाइनल मोमेंटम उसको जो पॉइंट बी पे है अगर ऑब्जेक्ट, तो इसको हम फाइनल मोमेंटम कहते हैं. तो इनिशियल मोमेंटम हमारे पास पी आई एम वी आई, because velocity mass can't, but its velocity at a point A is initial velocity, and finally pf is equal to m, mass is constant, and we call it final velocity. So here we put pi, because change in momentum also from final minus initial, pf minus pi divided by time. And we know that change in momentum is equal to, जब चेंज मैंने कहा था जिस तरह वेलोसिटी हमारे पास चेंज आता है, वेलोसिटी वी एफ माइनस वी आई हम कर देते, इस तरह मोमेंटम भी पी आई माइनस पी एफ माइनस पी आई करेंगे, तो इसकी जगह हम पी एफ माइनस पी आई, और वो किसके बराबर आ पाएगा, डेल पी बाई डेल टी. इट्स मीन दैट वी कैन डिफाइन मोमेंटम इन टर्म ऑफ सेकंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स. सो इट इज़ अबाउट, शॉर्टली इट इज़ अबाउट मोमेंटम, के मोमेंटम हमारे पास क्या है. मोमेंटम बेसिकली द क्वांटिटी ऑफ मोशन में बता रही थी कि फोर्स आप अप्लाई करें किसी चीज़ पे, तो उसकी मोशन की क्वांटिटी कितनी है वो उसको हम मोमेंटम कहते हैं. और फिर हमने हाउ फोर्स इज रिलेटेड टू मोमेंटम, के रेट जब मोमेंटम में चेंज आएगा वो किसके रिस्पॉन्सिबल बराबर होगा, हमारे पास फोर्स के बराबर होगा. नेक्स्ट चैप्टर वी शुड इंशाल्लाह डिस्कस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम.